Good morning. So it's about 7 o'clock और we're going for our morning trek. फटाफट एक चाय पियेंगे, निकलेंगे. So we are off. That is Rajesh, our tour guide. For all the activities, he'll be there with us. He has a spotting device with him. So we are going to this mountain. So on that tree, this tree is a bird called crested hawk eagle. So this is a beautiful device. Let's see this very well. Things. And once you touch, it goes like a ball. Okay. Just try it. Little. टच करने वाला बोलता है ना कोई भी गाइड कि ये टच करिए मैं ये होगा. नंदन फटाक से मुझे आगे कर देता है. क्यों नंदन, कीड़ा टच क्यों नहीं किया तूने? हर चीज़ देखा ये हमेशा मेरे को आगे कर देता है. कोई भी कोई चीज़ देता है कि ये हाथ लगाइए वो हाथ लगाइए, वो मेरे को आगे कर देता है फटाक से. Grass also there is a lot of many varieties are there. So there's a particular bamboo called like a green bamboo. So usually these bamboo they grow close to the stream and rivers, right? And every monsoons come, the new bamboo shoots are come out. When the shoots come, sloth bear, porcupine, elephant, they love to eat. And also people can make pickle and curry from this. So this bamboo, once a particular age comes, like 50 to 60 years come, the flower come. When the flower, like after the flower is the rice. Once the rice are fall, is the bamboo family totally get dies. They grow new bamboo. And also very very fastest grow very bamboo. Fast, yeah. So each day almost 6 to 7 inches. Yeah. Yeah. 1,800 square kilometers. Wow. And also people used to call like Blue Mountain. We have a flower called Neel Kurunchi. So that flower blooms once in a 12 years. When the flower comes, the mountain looks like a navy blue sometimes. It grows on this mountain only? Like yes, behind this. So pretty. You are in Munnar. Okay, so there are two ways to go. One is straight up and one is there's a path there and then steps from there till the peak. So देख लिया होगा, we are taking the difficult route. काफ़ी chances है नंदन के गिरने के. I hope I can capture it. See this one also. Once you touch, it like, becomes round. Yeah. No. This is not poisonous. It's not poisonous. Okay. I don't know. No, it's not poisonous. बोल रहा तो नहीं होगा. Okay, bye. कितना हो गया? कितना बचा है? और इसी के साथ हम पहुंच गए. तो अब निकल रहे हैं वापस एंड वी टेकिंग द स्टेयर रूट. नीचे से स्टेयर्स बहुत क्लियरली विजिबल है. सी ऊपर में से ऐसा दिखता है जैसे स्टेयर्स है ही नहीं, पर है. तो यहाँ तो प्रॉपर स्टेयर्स ही. जब से वेव 2 पैंडमिक थोड़ा सा कम हुआ था,
हम लोगों का कोशिश था कि हम लोग वर्क फ्रॉम अ लोकेशन डेस्टिनेशन करें एंड व्हाट बेटर वी कुड हैव हैड। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं डियर्स हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे दीपा बैठ के काम कर रही है। बहुत मच्छर काट रहे थे तो हम लोग यहाँ पे ओडोमॉस लगाने आए थे। ये देखो, ये देखो, एग्जैक्टली। नंदन तू ही सारे खेले जा रहे, मैं देख रही हूँ चांस ले रहा है तू। चीटर का It is so amazing to wake up to this. दिख नहीं रहा। My God. गुड मॉर्निंग। तो हुआ ये है कि पीछे हो रही है, पता नहीं दिख नहीं रहा, तो पीछे हो रही है बारिश काफ़ी तेज़। और प्लान ये था कि हमको सुबह जाना था एक वाटर स्ट्रीम, एक छोटा सा एक वाटर स्ट्रीम है वहाँ पे ट्रैक के लिए जाना था। बट दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ बिकॉज थोड़ी चढ़ान वड़ान है तो अब काफ़ी स्लिपरी हो जाएगा। तो देखते हैं अगर शाम को हो पाता है वो। अगर वो नहीं कवर हो पाता है तो वन थिंग दैट वी वांट टू कवर इज़ जीप सफारी, राइट। एकदम खूबसूरत रोड, पर एक जानवर नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग थोड़ा सा टूर करेंगे रिजॉर्ट का, क्योंकि कल तो हमारा एकदम ही पपट दिन था। सुबह में बारिश हो गई थी, कहीं जा नहीं पाए थे। एंड फाइनली इन द इवनिंग व्हेन वी वेंट फॉर द सफारी, इतना सन्नाटा था पूरे दिन, मतलब पूरे राइड में। इवन राजेश वाज लाइक, मैम इतना ज़्यादा साइलेंट है आज का दिन, देयर आर नो अलार्मिंग कॉल्स। यूजुअली व्हेन देयर इज़ अ वाइल्ड एनिमल अराउंड, monkeys, deers and birds, they all make a lot of alarming sounds. वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, इट वॉज एब्सोल्यूट सन्नाटा। तो थोड़ा सा पोपट वाला दिन था कल। तो ये एक छोटा सा एक जगह है, वी कांट गो राइट नाउ, इट इज़ अंडर रेनोवेशन। और एक घना बैम्बू जंगल, इतने सारे बंदर हैं प्रॉपर्टी पे। वाइट एंड पिंक लोटस। कल नंदन ने ये मशरूम्स की फ़ोटो ली थी, दिया है ऐसा, और आज देखो इतने बड़े हो गए। तो यहाँ हम लोग और नंदन, मतलब दिस इज़ द लाउंज एरिया, एंड यहाँ पे बैठ के मैंने काम किया था। मेरे ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और नीचे मेरे सर पे कुछ कुछ डाल रहा था वो। द पूल जो कि बंद है बिकॉज ऑब्वियस रीजंस।